important. Resource optimization team, they think they do not need a man or woman, they will produce a child with zero resources. Documentation team thinks they don't care whether the child is delivered, they will just document 9 months. Quality auditor, the person who is never happy with a delivered baby. The tester, a person who always tells that this is not the right baby. And lastly, the HR manager, I think it's important, a person who thinks that a donkey can deliver a human baby if given 9 months. So I think this is, am I right in, how the corporate works, these definitions? Now, what is the advantage of yoga? I was amazed to see one of the yoga teachers saying that, doctor, we will teach you yogas which will treat your liver diseases. And to give a cartoon appearance to this, I picked up some of the photographs of this, what yoga can do. Look at this. This is what is amazing. Look at the yoga postures. I'm sure with this liver will have good perforation, good blood circulation. So that's what is all yoga about. It's so amazing. Is wine good for health? We have a variety of spirits available. But the question is wine good for the health? Now this slide is dedicated to my friends who enjoy a glass of wine and those who don't and are always seen with a bottle of water in their hand. Let's see. In a number of carefully medical studies documented, scientists have demonstrated that if you drink 1 liter of water each day, particularly I'm sure it's in Bombay, at the end of the year we would have absorbed more than 1 kilo of E. coli. E. coli is the bacteria which resides in the intestines, which is found in the feces particularly. In other words, we are consuming 1 kilo of poop. However, we do not run that risk when we are drinking wine and beer. Why? Because alcohol has to go through a purification process of boiling, filtering, and or fermenting, whether it's a wine, whether it's tequila, whether it's rum or whiskey or any other liquor. So I think this makes a sense to the study that, look, the wine is better for health. Remember, water is poop, wine is health. Therefore, it's better to drink wine and talk stupid than to drink water and be full of shit. There is no need to thank me for this valuable information. I'm doing it as a public service. I think this is what is the question of the role of wine into medical health. Now the stress. The stress is political stress. The stress to the housewife and the stress to the general public of India, whatever maybe. I'm not going to really name it the income tax now after listening to you, sir. I think it's quite relieving to me that, you are so liberal. And so let me touch about a political stress. During his speech in Birmingham, recently on a visit to UK, spectators threw a lot of shoes at Asif Zardari. That was a stress to him. How did he translate this into the pleasure? Look at it. He took it as a donations collected from the UK and brought back home. I think this is one part of political stress and how you tide it over. And how are the stress of the housewives? I think there are centers opening now. I'm sure you will know there are daycare medical centers now in city. You walk in the morning, get a hernia operation, go back home in the evening. So daycare centers. The similar way all over the world, there are husband daycare centers coming now to relieve the stress of the world. What are these? You need time to relax, need time to yourself, want to go for shopping, leave your husband with us, we look after him for you, you only pay for his drinks. So, this is to relieve the stress of the housewives. And lastly, of course, I have requested Pradeep ji not to give my PAN number to Naresh ji and, the biggest way to relieve the stress is counting money. In fact, I could not really, this is the biggest stress reliever. And lastly, the government of India, which put an income tax, I think this was an important slide. The income tax department has announced that they will give a free pencil sharpener to all the taxpayers. It can be placed on your desk as a constant reminder of the service they provide to you each year. And look at the cartoon. So, you have different types of stresses. You have different type of relieving the stresses. So I thought I'll deviate from my medical practice and give you all this. And finally, I think this is what is the true networking. You must listen to this.
a popular motivational speaker, like we have the speakers here, was entertaining his audience. He said, "The best years of my life were spent in the arms of a woman who wasn't my wife." The audience was silent and shocked. And the speaker added, "And that woman was my mother." And the laughter and applause. Everybody liked that. That's very good, very good. So this speaker goes back home. He has a party for the people in the evening. And then a week later, the top manager trained by the motivational speaker tried to crack his very effective joke at home. He was a bit foggy after the few drinks. He started saying loudly, "The greatest years of my life were spent in the arms of a woman who was not my wife." The wife went red at shock and rage. Standing there for 20 seconds trying to recall the second half of the joke, the manager finally blurted out, "And I can't remember who she was." So, the moral of the story is, don't copy if you can't paste. That's what is the networking. And friends, to bring to a final, a 5 minute talk, is I firmly believe no matter how noble our intention, my intention to make you laugh and smile and get you different from the medical field, the world judges us by our presentation. I'm sure after my presentation you ought to judge me that this guy have really made little laughter. But for the evening, no matter how perfect our presentations are, today's evening is judged by Pradeepji's intentions. That's what intention of having a good audience and go on. I'll give you 3 of these different couplings. One is the atmosphere of our country. I think this was very touching, 4 or 5 lines which I remember having read. What is the state of our country today? क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे? कोई मस्जिद बना बैठा, कोई मंदिर बना बैठा। अरे दोस्तों, हमसे तो अच्छे परिंदे हैं जो कोई मंदिर पे जा बैठा, कोई मस्जिद पे जा बैठा। I think this is what is, the division of the society, the religion, what we really hate it today. Another was little serious, this is the real Shari. वो आई मेरी कब्र पे, वो आई मेरी कब्र पे नए आशिक के साथ। कौन कहता है कि दफनाने के बाद जलाया नहीं जाता? And lastly, of course, I'm going to give you a very humorous aspect of a little coupling. And this is for our Marwadi Achar. There was something on Marwadi Achar. How powerful Marwadi Achar is. एक था सरदार, बैठा था बेकार, उसका बाप था लाचार, उसकी माँ को आया विचार, उसने खिलाया बेटे को मारवाड़ी अचार। देखो हो गया चमत्कार, आज वो चलाता है दिल्ली में अपनी सरकार। इस पूरी जर्नी में 25 साल की इस यात्रा में जिन लोगों ने प्रदीप बंका का साथ दिया, बंका एंड बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो नींव बन गए, बंका एंड बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा कि इस रजत जयंती के महोत्सव पर हम सब लोगों उन लोगों का अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें, फेलिसिटेट करें, जिन लोगों ने उनकी इस यात्रा में उनको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा परिश्रम दिया है, पुरुषार्थ दिया है। और इसलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदीप बंका को कि वो यहां पर आएंगे। सबसे पहले हम उन लोगों को फेलिसिटेट करेंगे जिन लोगों ने इन 25 साल की जर्नी में, 25 साल की यात्रा में बंका एंड बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पहुंचाने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। और उस कंट्रीब्यूशन में जो इनके एक्स एम्प्लॉइज हैं, एक्स लोग हैं, ऐसे 3 लोगों को बंका एंड बंका ने कहा कि हम इनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। And that number 1, who is today the partner of a very big firm, Ernst & Young, Mr. परेश पारिक। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री नरेश कुमार जी को कि वो आकर के परेश पारिक को ये अभिवादन और अभिनंदन और फेलिसिटेशन देंगे। ही विल गिव हिम ए मेमेंटो। आप सभी लोग इस परेश पारिक को
जिसने बंका एंड बंका से अपने कैरियर की शुरुआत की थी. टुडे ही इज द पार्टनर ऑफ अर्नेस्ट एंड यंग, एंड गिव हिम ए वेरी बिग हैंड, सीए परेश पारिक. He has defined leadership, and I just want to quote what is leadership in his definition. A leader is a person who inspires others to do more, to think more, and to dream higher. In that perspective, I would like to say Pradeep Banka is a real leader, and thank you very much, Pradeep ji, and all the best for the future. And again, I am now calling CA Vipul Malkan. And then I am calling खुशबू बाफना. खुशबू बाफना. खुशबू बाफना ने वाकई बंका एंड बंका चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को खुशबू दी. आज वो महक रही है 25 साल के बाद. खुशबू बाफना. Both of you want to say something, please come. First, Vipul Malkan. It was a really wonderful journey for us. So I would say that it was like जिंदगी ना मिले दोबारा. आज जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं ये 100% अपने सर को डेडिकेट करती हूँ. मिस्टर प्रदीप बंका सिर्फ मेरे प्रिंसिपल नहीं रहे, मैं उनको अपना गॉडफादर बुलाती हूँ. जो भी मैंने प्रोफेशनली या पर्सनली अचीव किया है, मैं मानती हूँ कि उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें. व्हेन आई सी अ लॉट ऑफ यंग पीपल सिटिंग बिहाइंड देयर, आई वुड ओनली लाइक टू टेल देम वन थिंग: you are in a great place at Banka and Banka. You can learn whatever you want. Sky is the limit for you. I have had my own share. Whatever I wanted to do, I have done. So guys, just grab this opportunity because you will not get it again. Trust me on that. Thank you. Thank you very much, Vipul Malkan और खुशबू बाफना, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. And now I am calling Shri Veerbhadrappa ji, those who are associated with Banka and Banka. Banka and Banka के साथ जो इस समय वर्तमान में काम कर रहे हैं, ऐसे हैं CA राजेश भीमराज का. वीरभद्रप्पा जी उनको फेलिसिटेट करेंगे and he will give a memento. And next one is Sandeep Kanoi. और हमेशा प्रदीप बंका जी जो इनको बताते रहे हैं, एंड दोज हु आर विद देम, हमेशा ये कहते रहे हैं, लेट अस रोल अवर स्ट्रेंथ, ऑल अवर स्ट्रेंथ. एंड प्रदीप बंका ऑलवेज सेज लाइक दैट, अवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल. थैंक यू वेरी मच. हमेशा जिनके साथ रहे प्रदीप जी, उनको हमेशा उन्होंने बताया कि लेट अस रोल अवर ऑल अवर स्ट्रेंथ, अवर स्वीटनेस अप इनटू वन बॉल, एंड टीयर अवर प्लेजर्स विद रफेस्ट ड्राइव थ्रू द आयरन गेट ऑफ लाइफ. थैंक यू वेरी मच भद्रप्पा जी. आई एम कॉलिंग मिस्टर तुलसियान जी, श्री SP तुलसियान, एंड ही विल फेलिसिटेट अवर गेस्ट on behalf of Mr. Pradeep Rathod, Shri Rituraj ji Gupta. Shri Rituraj ji Gupta किसी कारणवश नहीं आ पाए. आप उनकी तरफ से जोरदार तालियों के साथ श्री ऋतुराज जी का स्वागत करें. थैंक यू वेरी मच तुलसियान साहब. नाउ आई इनवाइट D. Sivanandan साहब to come over the stage. First of all, I am calling Santosh Kumar Jhunjhunwala ji. Santosh Kumar Jhunjhunwala ji, he will come and accept the memento from D. Sivanandan sahab. Give him a very big hand. आपकी तालियां भी उतनी ही ऊपर से बजनी चाहिए. आई एम नाउ कॉलिंग नरोत्तम J. ठक्कर साहब, जो काफी पुराने, right from the very beginning, associated with Banka and Banka. Madhusudan ji Roya. Madhusudan ji Roya, please come and accept. Thank you very much, Shivanandan sahab. Thank you very much.
Now I am calling CA Sunil Singhania. Please come over the dais. मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री राम विलास जी हुरकट को। अच्छे दोस्त मिल जाएं, ए फ्रेंड इन नीड एंड फ्रेंड इन डीड। प्रदीप जी के साथ भी कुछ ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने हमेशा उनका साथ निभाया, दोस्ती को अमर कर दिया। बुलाता हूं अमर शर्मा को। दोज हु हैव एक्चुअली प्रदीप और अमर की दोस्ती को अमर करने वाले ऐसे अमर शर्मा को रामविलास जी हुरकट उसका अभिवादन करेंगे और अभिनंदन करेंगे, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आप सभी लोग जोरदार तालियों के साथ ऐसी दोस्ती को प्रणाम करेंगे। प्रदीप बंका और अमर शर्मा। तो प्रदीप के जन्म के गोल्डन जुबली और उसके प्रैक्टिस की सिल्वर जुबली पर बहुत बहुत बधाई हो। मेरे नज़रों में बड़ा आदमी वो है, एक लिस्ट बनाइए और वो कौन कौन सी चीजें आपके पास में हैं जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। वो जितनी ज्यादा मात्रा में आपके पास में है, आप उतने ही बड़े आदमी हो। क्या आप चरित्र खरीद सकते हैं? क्या आप व्यवहार खरीद सकते हैं? क्या आप आरोग्य खरीद सकते हैं? क्या आप भूख खरीद सकते हैं? क्या आप नींद खरीद सकते हैं? क्या आप अच्छे दोस्त खरीद सकते हैं? ऐसी सब चीजों का प्रचुर भंडार प्रदीप बंका में है। इसलिए आप एक प्रदीप बंका एक बड़ा आदमी है और वो मेरा दोस्त है, इसलिए मैं भी बड़ा आदमी हूं। बहुत बड़ी बात कही। तुलसी ने लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्तिकाल परखिए चारी। धैर्य हमारे साथ हो, मित्रता हो, पत्नी हो, तो ये सब चीजें जो एसेट्स होती हैं, आपत्तिकाल में इन्हीं की परख होती है। अमर शर्मा उस परख में खरे उतरे, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन और अभिवादन। एक दूसरे मित्र को बुलाता हूं, शैलेंद्र दीक्षित। एक अच्छे दोस्त की भूमिका को निभाया इन्होंने जिंदगी में। शैलेंद्र दीक्षित, प्रदीप बंका के एक अच्छे दोस्त। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर दिलीप